Good morning, my dear students. Jai Hind to all and welcome again in your math class. Now, students, today we will do exercise number 2 of multiplication. So, take out your math notebook and let's start with me. Now, students, write down the first date, and today is 20th November 2020. Okay, and day is Friday, and this is your classwork, and this is unit 7, multiplication. And today we will do exercise of multiplication. Okay, so exercise number 2. Okay, already हम one exercise कर चुके हैं. Okay, last this is beta exercise 1. Okay, and this is exercise 2. So write down the question number 1 beta. Multiplication with carrying. ओके, आज हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसमें हम नंबर को कैरी भी करेंगे. ओके, सो राइट डाउन द फर्स्ट बेटा. फर्स्टली राइट डाउन द TO, देन 17 multiply by 5. So our product is 5 7 जा बेटा 5 का टेबल में आप काउंट कीजिए. 5 7 जा 35. So we will write down here 5 according to ones place. Okay, and we'll carry here 3 at tens place. Fine. Now 5 ones are beta 5 and 5 plus 3 8. So write down here 8 at tens place. Fine. Now next beta TO first, then 24 multiply by 4. So our product is 4 4s are beta 16. So write down here 6 and we will carry here one number. Okay, so 4 2s are beta 8 and 8 plus 1 9. So write down here 9. So answer is 96. Fine. Now next beta 39 multiply by 2. So there is the answer beta. 2 9s are 18. Then write down here 8 and carry here one number. And 2 3s are beta 6 and 6 plus 1 7. Okay, you have to do this in homework. 14 multiply by 7. Okay, beta you have to do these two in homework. Fine. Now next beta, these are 2 digits multiplication number. Now 3 digit multiplication numbers. Okay, so write down first HTO and the number 58 and multiply by 8. Okay, so beta 8 8s are beta 64. So write down here 4 and we will be carry here 6 number. Okay, so beta 8 5s are 40. So 40 then plus 6 46. So we will write down here 6 4 46. So our answer is
464. Fine. Now next beta. HTO, then 37 multiply by 9. So beta 9 sevens are 63. So write down here 3 and carry here beta 6 number. Okay. So beta 9 threes are 27 and 27 plus 6 जो हमने ऊपर नंबर कैरी किया था plus 6. Okay. So 6 and 7 beta 13. Okay. 3 and 1 here. So 2 plus 1 3. So write down here beta 33. So our answer is 333. Fine. Now next beta HTO. Beta these two questions you have to do in homework. Okay. In homework. So 78 multiply by 6. Okay. And 96 multiply by 3. Okay beta, you have to do these two questions in homework. Fine. Now next question beta. Write down the date again. 20th November 2020. And this is your classwork. Fine. Now question number 2 beta. Now beta write down the question number 2. Skip count in 6 and 8 to get the table of 6 and 8. That means बेटा हमें यहाँ पे 6 की काउंटिंग करनी है, 6 की स्किप काउंटिंग करनी है जिससे हमारा 6 का टेबल बन सके. एंड नेक्स्ट में बेटा 8 की स्किप काउंटिंग करनी है जिससे कि हमारा 8 का टेबल बन सके. फाइन. नाउ टेबल ऑफ 6. Fine. According to beta table of 6. So we have to skip 6 number. So write down here beta first 6. Okay. Then beta 6. So we have to skip 6 number. So after 6 beta 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक बेटा हमें 6 नंबर के बाद आगे स्किप करना है. सो 7 8 9 10 11 12. सो राइट डाउन हियर बेटा 12. ओके. नाउ नेक्स्ट बेटा आफ्टर 12 1 2 3 4 5 6 तक हम स्किप करेंगे. 12 के बाद बेटा 13 14 15 16 17 18. So write down here beta 18. Fine. Now next beta after 18 beta 19 20 21 22 23 24. So according to 6 skip beta 24. Fine. Now next beta after 24 beta 25, 26, 27, 28, 29, then 30. Okay. Now next beta 30, then again skip 6 number. After 30 beta
31, 32, 33, 34, 35, 36। आप देख रहे हैं ना बेटा, मैंने यहाँ 6 नंबर तक ही स्किप कर रही हूँ हर एक नंबर के बाद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बेटा 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, then 42. So write down here 42. Fine. Now next beta, after 42 beta 43, 44, 45, 46, 47, 48. So write down here beta 48. Fine. Now next beta 49, 50, 51, 52, 53, then 54. So 54. And in the last beta 55, 56, 57, 58, 59, then 60. So 60. ओके बेटा, हमने यहाँ पे बेटा 6 नंबर को स्किप करके एक 6 का टेबल बना लिया है। 6 में मैंने 6 नंबर स्किप किया, देन 12, फिर मैंने 6 नंबर स्किप किया, देन 18। सो इस तरह से बेटा आप रीड कीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, देन 6 10 जा 60। हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया बेटा, एक टेबल ऑफ 6। फाइन। नाउ नेक्स्ट बेटा यू हैव टू राइट डाउन दिस इन होमवर्क। ओके, टेबल ऑफ 8. Beta, here you have to find out the table of 8 by skip counting. Fine. So 8. Then you have to complete this by skip counting. Fine. Then 24, 48, 64, 80. Okay beta, you have to fill these missing numbers, okay, according to skip counting by 8. Fine beta. Okay, now next beta, turn the page, write down again date, and this is your classwork. Write down here beta question number 3. Draw the jumps and complete the multiplication sentences for the following. Okay, now number 8 beta, multiply 4 by 2. Fine, that means beta you have to multiply here 4 times of 2. Okay, now beta firstly we will draw here a number line. Okay, so with your scale draw here a number line. Right? Then arrow. Okay, then beta in every line beta mark the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Okay, now beta only 12 is sufficient. Okay, so here beta we have to draw, multiply 4 by 2. According to this beta, 4 jumps. Okay, 4 jumps of 2. ओके, दैट मीन्स बेटा हमें यहाँ पे 2 के 4 जम्प्स ड्रॉ करने हैं. फाइन. सो अकॉर्डिंग टू दिस बेटा वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, सो 0 to 2. 2 का जंप हमें करना है ना. सो 1 2. सो वी विल ड्रॉ अ कर्व लाइन फ्रॉम 0 to 2. फाइन. नाउ नेक्स्ट बेटा 4 टाइम्स हमें ड्रॉ करना है. सो अगेन 2 के बाद बेटा 2 जंप करने हैं हमें. 1 2. So 2 to 4. Fine. Now next बेटा 4 के बाद बेटा 1 2. 2 jump. Okay. Then again बेटा 6 के बाद 1 2. So 2 jump. Okay बेटा. Now 1 2 3 4. So these are 4 jumps by 2. Fine. So 4 jumps of 2 is equal to बेटा 4 multiply 2. So our answer is बेटा 8. See this बेटा 0 to 8 हमने 4 टाइम जंप किया है 2 का. सो हम यहाँ पे कहाँ पे स्टॉप किया हमने 8 नंबर पे. सो 4 2 जा 8 is the answer. Fine. Now next बेटा part B, you have to do this in homework. Okay, here you have to multiply 3 by 4. That means बेटा you have to draw here jumps. 3 jumps आपको draw करने हैं. Firstly we will draw here again a number line. Fine. Okay. So 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, now 13. Fine. Now beta you have to draw here 3 jumps. Okay, so 3 jumps of 4. Okay, so you have to write down here 4. Then is equal to beta you have to write down here answer beta. Fine. Okay, आपको बेटा क्या करना है यहाँ पे आपको 3 टाइम जंप करना है 4 नंबर का. ओके, 1 में आपको बेटा करके दिखा देती हूँ. ओके, सो फ्रॉम 0 to 4 1 2 3 4 लाइक दिस बेटा. ओके, 1 जंप मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया है. अब आपको इसको आगे कंप्लीट करना है. फाइन. एंड राइट डाउन हियर लाइक 3 जंप्स ऑफ 4. Fine beta. Now beta you have to complete this question. Okay, now you have to complete all these questions from question number 1 2 and 3 in your maths notebook. Fine beta. Now that's all for today beta. Thank you. Bye bye.